Class Adda and I am Pritam, and we are continuing this polynomial and this polynomial, this is lecture 2, and this lecture basically cover the remainder theorem. So what does remainder theorem? A remainder theorem first I'll before starting remainder theorem, I'm telling one thing, that we basically know for any division that dividend equal to divisor plus into quotient plus remainder. Okay, this is simple. Suppose I am considering I'm dividing 25 divided by 27, so the quotient will be 5, it will be 25, remainder equal to 2. So according to these things, a dividend what is dividend? Dividend means 27, so 27 equal to what is coming? Divisor, that is 5, and quotient is 5 plus remainder, that is 2. So all these things, depending on these things, this remainder theorem is coming. What is remainder theorem? Is the remainder theorem, if you write it, it's like this. Let px be any polynomial of degree. Let px be any polynomial with degree greater than or equal to, इसका इक्वल टू होना चाहिए equal to 1, and let be any real number and let any real number equal to a. इसका मतलब है हम लोग कोई भी एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं जिसका डिग्री is equal to 1 or greater than 1, and on such case we are taking another real number, is considering this one as a real number, maybe 0, 1, 2, 3, 4, whatever. Under such situation if, अब ये मैंने दो एजम्पशन लिया, एक पॉलिनोमियल लिया जिसका डिग्री कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए या तो ग्रेटर देन होना चाहिए, और ये केस में और एक मैंने रियल नंबर ले रहा हूँ जिसका वैल्यू का हम लोग मान रहे हैं। अब अंडर ये सिचुएशन जब px इज डिवाइडेड, if px is divided by the linear polynomial, divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder p. ओके, सो इसका मतलब क्या है सिंपली भाषा में, अब जब ये px को मैं डिवाइड करूँगा, किससे डिवाइड करूँगा? x माइनस a ये टर्म्स है, तब तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? p. अब उसको मैं सिंपली किताबों को, दिस इज द नॉर्मल थ्योरम, इफ आई एक्सप्लेन दिस वन इट विल बी लाइक दैट. सपोज एक पोलिनोमियल मैं कंसीडर कर रहा हूँ x to the power 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. अब ये मैंने पोलिनोमियल लिया है, तो अब उसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? x माइनस 1 से उसको डिवाइड कर रहा हूँ. अंडर सच सिचुएशन तो ये क्या हो गया? ये मेरा px हो गया, और ये क्या हो गया? ये मेरा pa हो गया. When we do this one in the remainder theorem, this is px. So if it is divisible by this one, then x equal to 1 should be its one root. इसका एक रूट x equal to 1 होना पड़ेगा. अब जब x equal to 1 इसका रूट होगा, तब मैंने यहाँ पे x equal to 1 पुट करके क्या मिल रहा है मुझे? px का वैल्यू क्या मिल रहा है? p1 equal to 1 plus 1 minus 2 plus 1 plus 1. अब कोई भी ये 1 कैंसिल है, इसका वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब ये रिमाइंडर कितना मिलेगा? दिस शुड बी
remainder. So this is our remainder theorem. So this will be more clear if we deal with some examples. So let's move on the remainder. So according to remainder theorem, if a dividend problem, we solve divide some functions with some linear polynomial terms, then the remainder should be 0. Okay, let's move on this exercise. So exercise 2.3. Exercise 2.3, the first question is we have to find the remainder. So for remainder, if we want to find the remainder, we the first method is with division method. The function px is given. What does they given? X cube 3x cube plus 3x square plus 3x plus 1 plus 3x plus 1. There is no 3. X cube plus 3x square plus 3x plus 1. Now I have to check with what value. Let's consider with first question, that is question 1 number x plus 1. So I have to check with this value. So what is the procedure for this one? We can know for a conventional division method, that is x plus 1 divided by x cube plus 3x square plus 3x plus 1. This is one method. I can divide this one. So what will be the result? Square, then is come x cube plus x square. Then subtract this one. This is will be 2x square plus 3x plus 1. So 3x square. So I have to put here 2x. Then it's become 2x square. This will come 2x plus 1. Oh, this one will be. Then it's come. If we subtract this one, it will be x plus 1. So x plus 1, that is plus 1. X plus 1. So remainder equal to 0. This is conventional method. So in this conventional method, I find that the remainder is 0. Now if we go through, so if we go through this remainder methods, now remainder method, remainder theorem. In remainder theorem, what I know, so the term is given x plus 1, given x plus 1. Okay, so what will be the root? So root will be what? X plus 1 equal to 0. So x equal to minus 1. So if we put x equal to minus 1, then this term become b minus 1 equal to minus 1 cube plus 3 into minus 1 plus 3 into minus 1. This will be square plus 1. So 1, so minus 1, it will be plus 3 minus 3 plus 1. So minus 3 plus 3 minus 1 minus 1 there. That is 0. So what does previously remainder theorem saying? If a is any real number and x minus a, I am dividing this one with x minus a, then pa will be the remainder. P will be remainder. It will be remainder. So the same thing we had done here. What is the function? The x plus 1. So from here I find the a is any real number. I put this real number value here. So whatever the results will come, this value is a remainder. So this is the remainder theorem. This is my px, and I am dividing px by x minus a, where a is a real number. When I am dividing x minus a, so from this equation, if this is a root, then x equal to a is the root of it, this one. And when I put this value, a real number value, as whatever the value we got, and this will be the remainder. So this thing, same things happening here. This is px, I am dividing with x plus 1. From here I put x equal to minus 1, and I put this value here, and whatever the results will come, this will be remainder. For example, if the previous case I show, on that case it comes 2, so the remainder will be 2. Okay, is it clear? If still you guys have any doubt, you can write in comment section. I will try to give you more clarification to understand this problem. Okay. Suppose I am doing another question number 4. The function will be same. Function मेरा same ही है, but the divider is question number 4. X plus 5. Yeah, is it?
Okay, if x plus pi is the divider, then pi will be a root. Okay, now I put this into a pi, whatever the value will come, pi cube plus 3 into pi square plus 3 pi plus 1. So I don't do anything with this, so this will be remainder. This will be remainder. Simple. Okay, should I recall these things? This is my px and pi any real number, as I told before. On that case I take it a, then p a, on that case it was pa, but here it will be p phi. Whatever the p phi value will come, this will be my remainder. Okay, this is remainder theorem. Okay, just pause the video and write the solution as soon as possible. Now we are trying to solve question number 2. What does question number 2 is trying? They are asking find the remainder when x cube is divisible by x minus 1. So this is the same question. What does they given? This equation they have changed. X cube minus x square plus 6x minus a, and I have to divide with this one with x minus a. Okay, so I have to divide this one with x minus a. That means x equal to a. Now put pa equal to, so if you put this, it will be a cube minus a into a square plus 6 into a minus a. So what is coming? A cube minus a cube plus 6a minus a. So a cube cancel, this will become 5. So these are the my remainder. Okay. Okay. Now this should be question number 2. Remind it. Now I'm moving towards question number 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसका एक फैक्टर हो कि नहीं है वो मुझे वेरीफाई करना है. ऑन दैट सिचुएशन वी हैव टू रिमाइंडर दैट जब कोई भी एक टर्म, कोई भी एक एक्सप्रेशन का फैक्टर होगा, ऑन दैट केस द value of this expression should be come to 0 when we put the root. So what are the given? They given question number 3, 7 plus 3x. वो मेरा फैक्टर है कि नहीं वो देखने के बोलना. किसके लिए? The function is given p I can give it as 3x cube plus 7x. 3x cube plus 7x. तो इसका मतलब ये है, मैंने जो ये डिवाइडर दिया है इससे मैंने जब कोई डिवाइडेंड को डिवाइड करूँगा तब मुझे जो रिमाइंडर आना चाहिए, ऑन दैट केस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0. जब रिमाइंडर 0 आएगा तब मैं बता सकता हूँ ये टर्म इसका एक फैक्टर होगा. अदरवाइज आई कांट से दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन. सो आई हैव टू चेक दिस वन. So again we can put in the remainder theorem, because remainder theorem is very easy. So for that what I have to do, if this is a factor then this term should be equal to 0. So this term is become 0, then x is coming minus 3 by 7. Now I put this p minus 3 by 7 equal to how much? 3 into minus 3 by 7 cube plus 7 into minus 3 by 7. So it's coming 3
is 27 minus 27, 7 7 14 and 14 into 7, 63, 28, 34. So 3 4 3 minus 21 by 7. So this is clearly said this is also negative term, this is also negative term. So then the remainder is never being 0. 327 is 1, 6, 81. So remainder is not equal to 0. Is not equal to 0. जब ये not equal to 0 होगा तो मैं इसको x का एक फैक्टर नहीं बता पाऊंगा. अब जब इसका वैल्यू 0 आता तो हम लोग बोलता ये एक फैक्टर होता. Since the remainder is not coming to 0, so I will tell this is not a factor. Okay. So with this I'm finishing exercise 2.3. So let's see next exercise. Okay, now we are starting exercise 2.4. So what does 2.4 is telling? 2.4 is dealing with the factor theorem. Uh, 2.4 is based on factor theorem. What does factor theorem tells? So okay, factor theorem I'm not explaining here because it will consume a lot of time. I'm directly going to exercise and I will discuss the factor theorem there. Okay, so exercise 1.2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये बता रहे हैं. अब इसमें एक पोलिनोमियल का फैक्टर दिया है. फैक्टर क्या दिया है? फैक्टर इज गिवन x प्लस 1. बट आप यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्रेशन दिया है. एक्सप्रेशन 1 2 3 4. अब मुझे चेक करना है ये किसका फैक्टर ये x प्लस 1 है. तो मैंने क्या बताया, जब कोई भी चीज़ का फैक्टर मैं निकालूंगा तो ऑन दैट केस जैसे कि मैंने x प्लस 1 से कोई भी फंक्शन को px से डिवाइड किया तो ऑन दैट केस मुझे जो रिमाइंडर आना चाहिए वो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए. ऑन दिस केस आई कैन से x plus 1 will be a factor of this one. Okay, if it is not coming 0 then I will don't say this factor of 1 plus 1. So I can say this is a root of this equation. Okay, so if ये root होगा तब मैं ये बता सकता हूँ x plus 1 equal to 0. When x plus 1 equal to 0 that is x equal to 1. Sorry, minus 1. Okay, and जब x इक्वल टू माइनस 1 होगा ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और इसका वैल्यू जब 0 आएगा तब मैं ये बता सकता हूँ दिस विल बी लाइक फैक्टर ऑफ दिस वन. ओके, दिस इज अ सिंपल मेथड. सो लेट्स सी व्हेन वी डील विद एक्सरसाइज देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू गाइस. मैंने क्या बताया, जैसे कि मैंने कोई भी एक रैंडम एक्सरसाइज उठा रहा हूँ जैसे कि तो ये है मेरा फैक्टर है कि नहीं मुझे चेक करना है. जब ये फैक्टर होगा तब मतलब this should be equal to 0. Should be equal to 0. So that is x equal to कितना होना चाहिए? -1. अब ये x equal to -1 पे मुझे कितना वैल्यू चेक करना है? x to the 4 plus x cube plus x square plus x plus 1 I think. X square plus 1 plus 1. So this is my this is equal to my px. अब मैं p-1 पे ये वैल्यू का चेक करूंगा. जब ये वैल्यू 0 आएगा तो मैं बता सकता हूँ x plus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन. वाई? बिकॉज x plus 1 इक्वल टू जब ये फैक्टर होगा तब मैं x इक्वल टू -1 एंड ये x इक्वल टू -1 वैल्यू पे इसका वैल्यू शुड बी 0. इसका वैल्यू 0 होगा तो इसका रिमाइंडर भी 0 आएगा. इज इट क्लियर? सो व्हेन आई पुट दिस वैल्यू हियर एंड इज वैल्यू इज कमिंग 0 मींस रिमाइंडर इज कमिंग 0. So when remainder is coming means this term will be divided this term. So this term is a factor of this one. Okay, let's see. So -1 to the power 4 plus -1 cube plus -1 square plus -1 plus 1. Okay, so it's coming 1 -1 plus 1 -1 plus 1. Okay, so this term is okay. So it's not equal to 0.
since it's not equal to 0, ये term not equal to 0, जब ये term is not equal to 0, I can say x plus 1 is not a factor of this one. So x plus 1 is not a factor of किसका, x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1 इसका फैक्टर नहीं है. ओके, तो तब ये इसका फैक्टर नहीं है. तो लेट्स चेक अनदर वन. इसको चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 का ये चौथा वाला पार्ट. क्वेश्चन 1 का 1/4 पार्ट. The problem is given, so I'm writing this one, x plus 1 equal to 0, so x equal to 1, sorry minus 1. Under such situation, the term is given x cube minus x square minus 2 plus root 2 into x plus root 2. अब यहाँ पे मुझे x equal to minus 1 पुट करना पड़ेगा. तो minus 1 cube minus 1 square minus 2 plus root 2 into minus 1 plus root 2. What are the values coming? Is coming minus 1. This one is coming minus 1. This is coming minus plus. Remaining will be same 2 plus root 2. Then here also root 2. So this term is cancelled and is coming 2 root 2. This means plus 2 plus 2. Okay. So this is also not a factor. So x plus 1 is also is not factor. It's not a factor of px. Px you write this one. Okay. It's not a factor of this. So in this manner I have to check the other question. They have given 4 questions. Among them I have checked 2. That is question number 2 and question number 4. The remaining 2 you guys checks. If this value is coming 0, then it will be a only factor. Okay. Question number 2. Use the factor theorem to determine the whether gx is a factor of px in each of the following cases. तो gx और px दो इन लोगों ने ये दिया है. क्वेश्चन नंबर 2. तो कोई भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन 2. इन लोगों ने दो फंक्शन दिया है. एक दिया है px और एक दिया है यहाँ पे gx. अब पूछ रहे हैं gx ये px का एक फैक्टर है कि नहीं. ओके, तो इसका मतलब ये है, मैं जब gx से px को डिवाइड करूँगा तो ऑन दैट केस माय रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0. ये मुझे लॉजिक को अप्लाई करना पड़ेगा अब, और इसी लॉजिक को अप्लाई करके मुझे चेक करना पड़ेगा. अब रिमाइंडर चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका रिमाइंडर चेक करने के लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. मतलब रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये है, अब मैं gx का जो रूट आएगा, ये रूट को मैं यहाँ पे px पे पुट करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू 0 आएगा, तो इसका रिमाइंडर भी 0 आएगा. इसका वैल्यू 2 आ रहा है तो इसका रिमाइंडर का वैल्यू 2 आएगा. इसका वैल्यू 5 आ रहा है तो इसका रिमाइंडर का वैल्यू भी 5 आएगा. सो ऑन दिस मैनर आई हैव टू चेक व्हाट इज द remainder is coming, and if remainder is coming 0, then I can conclude that this gx is a function of px. Okay, so let's see. Question 2, px is given how much? x cube plus 3x square plus 3x plus 1, 3x square plus 3x plus
1. Okay, so this is my gx, sorry px, and gx का वैल्यू कितना दिया है, gx का वैल्यू दिया है x plus 2, x plus 2. So if it is a factor, this one is I'm assuming that gx is a factor. When gx is a factor, then gx plus 2 equal to 0. So x का वैल्यू कितना होना चाहिए, -2. जब मेरा gx एक फैक्टर होगा तब मेरा gx plus 2 equal to should be 0 होना चाहिए, और 0 से मैं x का वैल्यू निकाल सकता हूँ. x का वैल्यू कितना होना चाहिए, that is -2. Now I'm putting this value here. So p -2, p -2 होगा तो यहाँ पे -2 क्यूब plus 3 into -2 square plus 3 into -2 plus 1. So now this value is coming -8, 2 to the 4, 3 to the 12, -6 plus 1. तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये दोनों करने से -14, और यहाँ पे आ रहा है +13, दैट मीन्स -1. ये वाला जब -1 होगा मतलब इसका भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है. सो आई कैन कंक्लूड दैट gx is not a factor of px. ओके, जब मुझे gx को चेक करना पड़ेगा तब मुझे कंसीडर करना, एज्यूम करना पड़ेगा gx वैल्यू इक्वल टू 0. अब gx का वैल्यू जब 0 होगा तब x इक्वल टू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है. अब ये वैल्यू को मैं जब यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, देन स्क्वायर तो ये हो जा रहा है 12, और ये आ रहा है -2, दैट इज -6, देन +1 तो 14, और दिस विल बी 13, so equal to -1. So I can calculate like that. Okay. Okay, just pause the video and copy this one. From here I'm doing another one, question number 3. They have given px equal to how much, x cube minus 4x square plus x plus 6, x cube minus 4x square plus x plus 6 plus x plus 6, and gx they given equal to how much, x minus 3. So x equal to, I can write 3. Yeah, okay. So now put p3 equal to 3 cube minus 4 into 3 square plus 3 plus 6, this is coming 27, 3 is 9, 9 minus 36 plus 9, this is coming 36 minus 36, that is 0. So here the remainder is coming 0. If remainder is 0, then I can say gx is a factor of px. Okay, clear? अब यहाँ पे मैंने पिक क्या किया, gx का वैल्यू चेक किया, और gx से मैंने x का वैल्यू निकाला, और x का वैल्यू को मैंने px में पुट किया. px का वैल्यू पुट करने के बाद हम लोगों को निकाल लो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. अब ये वैल्यू जब 0 आएगा तो मैं बता सकता हूँ gx इज ए फैक्टर ऑफ px. Okay, because the condition for a factor theorem, when gx should be factor of px, then the remainder should be 0. When I divide this one by this one, this should remainder should be equal to 0. Okay. Now let's move on to the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का मैं कोई भी एक रैंडम पार्ट उठा रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन 2 कर रहा हूँ. इन लोगों ने px एक एक्सप्रेशन दे दिया
जिसमें एक अननोन वेरिएबल है जिसका नाम है टर्म है k, 2x² प्लस kx प्लस √2 और इन लोगों ने बताया क्या, जो इसका ये जो पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर है कितना, x-1 इज अ फैक्टर। जब ये फैक्टर होगा तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ x = 1 बिकॉज x-1 = 0। सो इफ x-1 = 0 देन x = कितना होगा, 1 होगा। अब जब x = 1 मैं पुट करूँगा तो देन दिस px शुड बी इक्वल टू 0। अब x = 1 पे क्या होना चाहिए, मेरा px का वैल्यू 0 होना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर? जब ये एक फैक्टर बता दिया मतलब x = 1 ये वैल्यू पे मेरा जो ये इक्वेशन दिया ये वैल्यू का उसका इक्वेशन का वैल्यू शुड बी 0। ओके, नाउ लेट्स चेक। ये इसका मतलब 0 मतलब 2 into, so I can put in 1 because at 1 = 0 should be equal to 0. So 2 into 1² plus k into x का वैल्यू 1 है प्लस √2 दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब ये जब 0 होगा तो मतलब 2 plus k प्लस √2 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू कितना होगा, -2 plus √2। x minus is a factor of this one, so x = 1. I put this one here. So when I put this value, since this is a factor of this one, so this term should be equal to 0. This condition should be satisfied. So for satisfying this one, I put this value here and checks the value of k. So k = 2 plus √2. Okay, guys, don't forget to check my calculation with your answers, and if anything mistakes and anything, many problems, issues are coming, please tell it in the comment section. I will try to clear these issues, and if any mistakes are there, so I will try to cover it there. Okay, from here I am doing another question. This is question number, suppose question number 4. I'm leaving some questions because this will be home tasks. You solve these things, and whenever you are facing some problems, because math is such a subject, when you do by yourselves, otherwise you never be get the problem. It is quite easy to understand from the blackboard and someone else is solving this problem, but when you do it by yourselves, it will be more clear to you. So that's why I will suggest do by yourselves whatever I'm doing here. This you also do. Along with that, whatever I left, you do these things, and whatever the problem you are facing, you just tell me in the comment section and I will try to solve this issue. Okay, now I'm moving to question number suppose question number 4. Question number 4, they have used the same the root is given x-1. The equation I will check, the px equal to the given how much, kx² minus 3x plus k, kx² minus 3x plus k. Yeah, so according to my logic, gx equal to 0. So from here I got x equal to 1. So at x equal to p equal to 1, this term should be equal to 0. इसका मतलब ये है k into 1² minus 3 into 1 plus k equal to 0. That is k minus 3 plus k equal to 0. So 2k equal to 3. So k equal to 3 2. So this is the answer. Okay, just pause the video and write it. Okay, now there is coming factorization. So factorization, this kind of problem you guys solved this before, so I'm not discussing go through details about that, just trying to solve this exercise.
So we'll do this one with splitting method. जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 को उठा रहा हूँ, ये क्या बताया, 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब मुझे ये एक्सप्रेशन को ऐसे ये जो मिडल वाला टर्म है उसको मुझे ऐसे डिवाइड करना है सो दैट आई कैन टेक सम कॉमन टर्म हियर. This term is known as splitting method. How do we split this one? For example, for this there is some rules. I have to this coefficient and this coefficient, I have to take these two in the form of multiplication. So it's coming 2 into 3, that is 6. Then I have to factorize this 6. 2 into 3 is not coming. So whatever the other factors, 6. So 6 divided by 6 equal to 1. So this is the another two term. And what will be the operation? Here is plus, here is also plus. So operation should be plus. If suppose there is minus and there is plus, then I have to some plus minus operation should be minus. So all these things I have to check. What I told, this constant term and this coefficient of x square should be multiplied, and whatever the multiplication term is coming, I factorize these things, and arranging this factor I have to match this one. So here it is clear. This is factors 2 and 3. So actually 6 is how many factors are there? 6 consists of 1, 2, 3 and 6. So among these 4 factor, I have to operate it in the form of plus or subtraction so that I can match with these terms. So here it is clear that 6 plus 1 equal to 7. So I can write this equation in the form of like that. अब मैं ये जो एक्सप्रेशन है उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ. 2x² प्लस 7x प्लस 3. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x² प्लस 6 प्लस 1 इंटू x प्लस 3. तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं लिखा, कुछ कम भी नहीं लिखा. So this term should becoming 2x² प्लस 6x plus x plus 3. So if this becomes these terms, so now we check. This is 6x, this is x. So 6x plus x equal to 7x. Here also written is equal to 7x. Now I can write this one is equal to 2x in common. So remaining is x, and here if we take 2x common, then the remaining is 3. And here also you check, this is 1, I can come on, then this become x plus 3. Nothing wrong with that. Now you multiply, this term will come, and if you multiply this thing, this term will come. Now you see, this is the common term is coming. Okay, x plus 3, x plus 3. So from these two I can come on x plus 3, and this will become 2x plus 1. Okay, so this polynomial I can express in the form of two term, in the multiplication of two term. So in this method we can factorize such kind of expression. Okay, just pause the video and try to do this one. And I'm not discussing in details because all these things I have you guys completed in class 8. Next I am shifting towards question number, I think question 4. Question 4, it is written as 3x² minus x minus 4. 3x² minus x minus 4. So similarly I have to multiply these two terms. Whatever the term is, result the multiplication is coming, I factorize these terms, and due to some operation I want to arrange this factor term. Okay, so the multiplication will be 12. So I can write 12, 3 into 4, or 6 into 2, or 12 into 1, all of them. Now you have to arrange. The operation will be, this is minus, this is plus. So plus minus, each operation will be minus. Okay,
This is operation. The operation will minus. So I have to NS this one in such a way that this term will come exactly through the addition or subtraction of this amount. So since here is given plus minus minus, so I have to do subtraction. So it will, I can write this term in the form of like that, 3x square minus 4 minus 3. 4 into 3 equal to 12. 4 minus 3, that will be equal to 1 minus 4. You see, nothing added extra. Everything is exactly same. Oh, there is x. So now is coming 3x square minus 4x plus 3x minus 4. Here, what I can get common? X I can get common. This is coming 3x minus 4. And from here, 1 common is coming 3x minus 4. So the both the term, the common term, that is 3x minus 4 and x plus 1. So in this way I can factorize this polynomial equation. Okay. So they have given 4 problem among, I have solved 2. The remaining 2 is your home task. Solve it by yourselves. So many times I'm telling these things that all these issues you have to solve by own you also. That means you have to do it, practice it at your home, and if you have faced problem, then you can consult with me through comment section and I will try to solve these issues. Okay, just pause the video and copy this one. Now we are moving towards question number 5. Question number 5. I'm solving question, suppose question 3. The equation is given x cube minus plus 13x square plus 32x plus 20. You see? Yeah. Okay. So on that case, what I have to do? On that case, I have to find firstly the root. Means exactly for putting which value this polynomial equation, polynomial expression will be become 0. So this is done by, आप खुद का मन में हुई एक ऐसा कोई भी एक रियल नंबर इमेजिन कीजिए जिसका वैल्यू पुट करने से ये इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए. So let's see if we consider this is int and p1. तो 1 लेने से क्या प्रॉब्लम होगा? ये भी सारे टाइम पॉजिटिव है, 1 बिठाने से सारे पॉजिटिव आएगा और सारे एडिशन होगा तो मेरा 0 नहीं आएगा. इंस्टेड ऑफ +1 आई एम पुटिंग -1. समझ में है क्यों +1 क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव टर्म है. अब पॉजिटिव टर्म को अब जब 1 बिठाएंगे तो यहाँ पे 32 आएगा, यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा. अब सारे प्लस है तो सारे एडिशन होगा. अब सारे जब एडिशन करेंगे तो आपका 0 वैल्यू आने का कोई चांसेस ही नहीं है. जैसे मैं -1 लेके चेक कर रहा हूँ तो -1 लेने से यहाँ आ रहे हैं और it will become -1 cube minus plus 13 into -1 square plus 32 into -1 और plus 20. तो इसका -1 और ये तो प्लस ही रहेगा, ये 13 रहेगा, यहाँ पे -32, यहाँ पे +20. तो ये टर्म आ रहा है +33 और ये टर्म मिला के आ रहा है -32. आधे मिले दोनों को काट दीजिए, आप आ जाएगा यहाँ पे 0. मतलब मतलब -1 इसका एक रूट है. जब -1 एक रूट है मतलब x इक्वल टू कितना है? -1. जब x इक्वल टू -1 तो मैं क्या बोल सकता हूँ? x plus 1 also equal to 0. If I keep it in this set, this is the equation equal to same thing. अब ये क्या कर रहा हूँ मैं? जैसे पहले कंसीडर करता था x + 1 = 0, देन x का वैल्यू पुट करता था, मैंने यहाँ पे आकर चेक करता था. यहाँ पे उल्टा कर रहा हूँ, मैंने
एक्स इक्वल टू -1 चेक किया तो इस मतलब क्या है, x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। इज इट क्लियर? तो ये जब x प्लस 1 फैक्टर होगा, यहाँ पे आप इसको एक लाइन गैप दीजिए, दूसरा लाइन पे आप लिख दीजिए यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1। ओके, क्यों ऐसे x प्लस 1 तीन बार क्यों लिखा? बिकॉज हियर इट इज ए क्यूबिकल क्यूबिक पोलिनोमियल। सो जब क्यूबिक पोलिनोमियल आएगा तब मुझे यहाँ पे तीन अलग अलग टर्म है। दिस इज वन काइंड ऑफ मेथड यू कैन से। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे क्यूब, तो मुझे यहाँ पे है x, मुझे स्क्वायर बिठाना पड़ेगा। अब जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके ये टर्म को आप यहाँ पे बिठाइए, तब ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, जब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे कितना था, 13 एक्स स्क्वायर था। अब मैंने कितना एक्स स्क्वायर लिखा, एक एक्स स्क्वायर है, तो रिमाइनिंग कितना रह गया, 12 एक्स स्क्वायर लिखना बाकी है। मुझे तो मैं कुछ अलग से नहीं लिख पाऊंगा, मुझे जो यहाँ पे है मुझे वही टर्म को यहाँ पे एक्सप्रेस करके लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जिस मैंने एक एक्स स्क्वायर लिखा तो 12 तो एक्स स्क्वायर रह गया, तो यहाँ पे 12 यहाँ पे एक्स पुट करता हूँ, दिस एक्स। ओके, यहाँ पे मैं 12x लिखता हूँ, 12। तो जब 12x लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए 12x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर 13x स्क्वायर। अब डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो रिमेनिंग कितना हो गया, 12x। बट यहाँ पे कितना था, 32x था, मैंने 12x लिखा, तो रिमेनिंग कितना रह गया, तो रिमेनिंग रह गया मेरा 20 पुट करने से यहाँ पे आ रहा है 20x और यहाँ पे प्लस 20। यहाँ पे अपना बॉर्डर खींच देता हूँ। ओके, सो नाउ अब देखिए, मैंने ये एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको लिखने के लिए मुझे क्या किया, पहले उसका रूट निकाला, रूट निकाल के उसको मैंने ये फॉर्म में लिखा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 को मैंने तीन टर्म अलग अलग टर्म में लिखा, क्योंकि मुझे पता है ये क्यूबिक फॉर्म है, तो ये इसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा। अब देखिए इसके क्या आ रहा है, अब यहाँ से x प्लस 1 तीनों में आ रहा है कॉमन, कैसे कैसे, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है। अब तीनों से मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो x प्लस 1, तो रिमेनिंग क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, अब ये जब एक्स स्क्वायर, अब ये पहला वाला जैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर 12x 20 से लाना है, तो 20 को मुझे यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा। 2 से देंगे तो 10 आएगा, 2 से देंगे तो 5 आएगा। तो मुझे चाहिए कितना, प्लस करके लाना है, तो मुझे ये सब की जरूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 प्लस 2 दैट इज 12 इंटू एक्स प्लस 20 दैट इज एक्स प्लस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ओके, रिमेनिंग पर डन है। अब क्या हो रहा है, x प्लस 1 तो रह गया था, और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये जो टर्म है यहाँ से मुझे x कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन लेने से यहाँ पे क्या आ रहा है, और यहाँ पे रह गया x, और यहाँ पे पीछे से आ रहा है 10। सिमिलरली यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, प्लस 2 कॉमन लेने से यहाँ पे भी x प्लस 10। अल्टीमेटली मेरा ये एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है, x प्लस 1, x प्लस 10 और x प्लस 2। दिस इज द आंसर। ओके, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले मुझे ऐसे एक वैल्यू पुट करना पड़ेगा जिसकी वजह से इसका वैल्यू 0 आएगा। मतलब ये क्यों मैं पुट कर रहा हूँ, मतलब ये वाला जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ ये इसका एक रूट होगा। जब रूट होगा तो मैं x इक्वल टू -1 लिख सकता हूँ। जब x इक्वल टू -1 होगा तो सेम इक्वेशन को मैं जब इस तरफ लेके आऊँगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अब ये x प्लस 1 को मुझे 3 टाइम्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, थोड़ा गैप दे के, और बीच में एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। अब वहाँ पे एग्जैक्टली ऊपर का इक्वेशन को मैच करा के लिखना है, तो मैच करा के लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 13 था, मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा, एक ही लिखा, तो रिमेनिंग कितना रह गया 12। तो उसको मैच कराने के लिए मैंने यहाँ पे 12 एक्स से मल्टीप्लिकेशन किया। जब 12 एक्स से मल्टीप्लिकेशन किया यहाँ पे, हाँ 12 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर आ गया, और ये दोनों का सम एक्जैक्टली ऊपर वाला आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरा कितना आ गया 12 एक्स आ गया, लेकिन था कितना मेरे पास था 32, मैंने लिखा 12, तो रिमेनिंग कितना रह गया 20। तो उसको मैच कराने के लिए मैंने 220 से मल्टीप्लिकेशन किया, तो आप देखने से एक्जैक्टली वही टर्म आ गया जो टर्म फर्स्ट लाइन में था। अब सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया, जब फैक्टराइज कर दिया तो ये वाला कैसा है एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 2। ओके ओके, सेम यहाँ से मैं और एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, ये है 5 का। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2y माइनस 1। ओके, ये दिया है मेरा पोलिनोमियल, और ये किस टाइप का पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 3 है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंशियल पार्ट उसका वैल्यू कितना है 3 है, मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल पार्ट, तो इसका मैं बोल सकता हूँ मैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो एस बिफोर मुझे ऐसा कोई रूट है उसको निकालना पड़ेगा जिसकी वजह से इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस टर्म भी है प्लस टर्म भी है, तो मैं क्लास 1 से ट्राई कर रहा हूँ। जब मैंने p इक्वल टू, जब मैंने x के वैल्यू 1 लिया तो ये क्या आ रहा है 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, सो 2 प्लस 1, यहाँ पे माइनस 2 माइनस 1, हाँ तो प्लस 3, यहाँ पे माइनस 3, दैट इज 0। मतलब x इक्वल जब मैं y इक्वल जब मैं 1 ले रहा हूँ तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो मतलब y इक्वल टू 1। ठीक है, जब y इक्वल टू 1 होगा तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। इज इट क्लियर? ये वाला बात समझ में? मुझे ऐसा कोई टर्म चॉइस करना पड़ेगा जिसके वजह से इसका वैल्यू 0 आएगा। जब इसका वैल्यू 0 आएगा मतलब ये एक रूट होगा। अब ये जब रूट होगा तो मैं इसको y इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली y को जब इस तरह लेके आएंगे तो ये एक एक्सप्रेशन ऐसे बन जाएगा। अब वही चीज़ को मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एक लाइन गैप, देन y माइनस 1 देन y माइनस 1। अब सिमिलरली मुझे ऊपर जैसे मैच कराना पड़ेगा, तो 2y क्यूब था तो यहाँ पे 2y स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये आ जाएगा 2y क्यूब, रह गया 2y स्क्वायर। मेरे पास था एक y स्क्वायर, मेरे पास था एक पॉजिटिव y स्क्वायर और मैंने यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव 2y स्क्वायर। इसका मतलब है मैंने कुछ ज़्यादा टर्म लिख दिया, मतलब ज़्यादा नहीं, मेरे पास था एक पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने -2 लिख दिया। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर से ये किया तो 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3y से मैं क्यों, क्योंकि मेरे पास एक y स्क्वायर पॉजिटिव था, मैंने लिख दिया -2y स्क्वायर, तो उसको मैच कराने के लिए मुझे और कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसका रिजल्टेंट वैल्यू एग्जैक्ट वही आएगा। तो इससे मैंने देखा 3y से मल्टीप्लाई करने से 3y स्क्वायर, ना 3y स्क्वायर 2y स्क्वायर जाने से कितना आ जाएगा, मेरे y स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब मैंने 3y पे लेकर यहाँ पे क्या -2y आएगा, बट मेरे पास था कितना 2y था, तो मैंने एक -y एक्स्ट्रा लिखा। ये -y का हटा करने के लिए मुझे एक +y से एडिशन करना पड़ेगा, तो मैंने एडिशन किया। तो और एडिशन कैसे किया, इसको यहाँ पर 1 पुट किया, तब ये रिजल्ट मेरे कितना आएगा। तो ये वाला टर्म यहाँ पे कॉमन, तीनों जगह में ये वाला टर्म है, ठीक है कॉमन टर्म आ रहा है। ओके, तो ये जब कॉमन टर्म आएगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह गया 2y स्क्वायर, यहाँ पे 5 भी कर देंगे प्लस 3y प्लस। अब इसकी टर्म को फैक्टराइज कर दिया, x y माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर
इसको 2 + 1 कर दें 3y + 1 ये हो जाएगा y - 1 2y² + 2y + y + 1 ठीक है। ये वाला टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y - 1 अच्छा यहाँ से 2y कॉमन जा रहा है आ जाएगा y + 1 और यहाँ से +1 कॉमन y ये वाला पार्ट को मैं रिमूव कर रहा हूँ then the equation comes like that from here I'm going to on the right क्या आ रहेगा y - 1 एक टर्म आएगा और पीछे से y + 1 कॉमन दोनों में और 2y + 1 एक टर्म आएगा ठीक है। अब जब 2y टर्म आएगा अब ये वाला पार्ट कैसे है a + b × a - b जिसको मैं y² - 1 लिख सकता हूँ a + b × a - b और यहाँ पे आएगा 2y + 1 okay this is the answer. So in this way I can factorize cubic factorial or a cubic polynomial and quadric polynomial okay and I can get also idea regarding the how to find the various kind of factorization, zero, root, etc. Okay, so so a lot of question I have left. Actually I try to cover 50% and up to 50% I try to give you as a homework and try to solve these issues. And if you don't get these things or any other issues, so you can write in comment section so I can deal with all these things through the comment section. So this is then with this problem I'm solving finishing exercise 2.4 okay, and in the next lecture, that is lecture number 3, I will cover exercise 2.5 and then we'll finish polynomial okay. Thank you.